Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi was in Jammu and Kashmir today for BJP's election campaign. During his rally, he promised that J&K will get the status of statehood soon and assembly elections will be held there. He also slammed the opposition for building a wall of Article 370 for Jammu and Kashmir and challenged the opposition, especially the Congress, to announce whether they will bring back 370 again. The PM said the country will never look at them if they attempt to do so. He also slammed the NC, the PDP, for wanting to take Jammu and Kashmir back to the old days. Well, meanwhile, of course, the Prime Minister also spoke about the fact that this is the first election where terrorism, stone pelting and separatism is not an issue. Responding, though, to the Prime Minister's criticism, former J&K CM Omar Abdullah has said it's a Supreme Court's verdict that elections have to be conducted in J&K before 30th September. So this has become a compulsion for the PM Narendra Modi. मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। हमारा सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं। एहसान उनके तरफ से तब होता अगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने हमें इलेक्शन दिए होते। ये तो अब उनकी मजबूरी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। और जहां तक स्टेटहुड का सवाल है, अभी तक तो हमें समझा नहीं पाए कि हमसे वो छीना क्यों गया। चलिए 370 जो है उनके मंशूर में दर्ज था कई सालों से, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक रियासत के मतलब रियासत से हटा के उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, ये कहाँ का इंसाफ था। इस फैसले को तो वो सही माने में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको समझा नहीं पाए। तो वजीर आजम साहब ने जम्मू में जो तकरीर की उसमें हमारे साथ कोई एहसान नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी फैसले के तहत उन्होंने बात की। Ajay Jandal is joining us for more details on this story. Ajay, a war of words erupting after Prime Minister Modi's rally today in Udhampur. Omar Abdullah hitting back. Well, yes, Prime Minister very clearly once again repeated his word and says that soon, after this election, Jammu and Kashmir to get the statehood back. And on that statement, Omar Abdullah, National Conference, senior leader, and now the candidate from the North Kashmir, he clearly he says that this is nothing, nothing like that BJP has, our Prime Minister is going to do something, which is favoring the people of Jammu and Kashmir, because it was due, and Supreme Court during the verdict clearly said that soon they have to conduct election in the Jammu and Kashmir, so assembly election has to take place and state it has to come back to the Jammu and Kashmir. So this is not something which BJP or the Prime Minister has done, by favoring the people of Jammu and Kashmir. So definitely war of word has erupted between the both, because it's election time, and during the election the people of Jammu and Kashmir and politicians especially, they do such things to target each other, to get benefited as as a vote from the people. But people has to see that what they need, what they have to do during the voting and the polling day. Right, Ajay, it's quite interesting that obviously we are getting a snapshot now of the main issues that the political parties plan to now keep raising
during the course of campaigning for the Lok Sabha elections, from Article 370 to restoration of statehood, to when elections will happen, to of course also the combating of separatism and stone pelters. We're getting an idea of the main issues that perhaps will be raised by all political parties this time around. Well, see, for last 10 years, BJP is in power and center, and the decision of abrogating 370 was taken by the union government in Delhi, BJP's government in Delhi. So definitely they have to come with the the same, and they have to raise this point that what has changed in the Jammu and Kashmir after the abrogation of 370, stone pelting, terrorism, separatism, that has declined. There is no word on that. There is no we can say that differences on that. But as far as the situation in the Jammu and Kashmir concerned, that has also improved. The multiple big project that was started during this 10 year, that is something which is definitely for a big point for the BJP to, if they are going for the poll campaign in the people. So they are saying that what we have done, we are asking you to vote for the BJP on that issue. But as far as the National Conference and the other opposition parties are concerned, they are saying that after the abrogation of 370, the people's jobs were snatched, and other issues they are trying to raise. They are saying that special status were with the people of the Jammu and Kashmir, and Jammu and Kashmir was having a special. Stay with us. Kavinder Gupta, former Jammu and Kashmir Deputy CM, is joining us now. Kavinder Gupta, war of words breaking out after Prime Minister Modi's rally. Omar Abdullah has hit back. Omar Abdullah has said it's government's compulsion. You have to hold elections before September 30th after what Supreme Court said. He's also countered what the PM said earlier. आप जिस व्यक्ति से Kavinder Gupta, can you hear me? I think we're having trouble with Kavinder ji's connection there. Let me go back across to Ajay Dandiyal, who continues to be with us. Ajay, interestingly, of course, now the battle for J&K is certainly heating up. Prime Minister was in J&K for the third time this year. Clearly, of course, the BJP relying heavily on Prime Minister Modi as their star campaigner for Jammu and Kashmir as well, Ajay. Well, that is what exactly happening, because during our, we have visited Udhampur, Kathua and other parts of the Jammu and Kashmir. What we have seen that on most of the areas, only Prime Minister's photographs, hoardings have been placed on different locations, and with the work they have done for the people of Jammu and Kashmir, abrogation of 370, aims and other projects which basically come up in last 10 years in the Jammu and Kashmir. On that issues they are asking for the vote, and very surprisingly saying that candidates, those who are fighting election, even they are during the poll campaigns, they are asking for the vote on the name of the Prime Minister. So definitely he is the only and the star big face. Ajay, stay with us. I believe we have Kavinder Gupta back with us once again. Let's attempt to go across to him once again. Kavinder ji, if you can hear me this time around, I was trying to ask you on Omar Abdullah's counter. He has said it's your compulsion to hold elections since the Supreme Court had said so. He's also, of course, responded to Prime Minister's points made at the Udhampur rally. देखिए, प्रधानमंत्री पहले से ही कह चुके हैं जो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस था वो चला, वो कंप्लीट हुआ दिसंबर 2023 में। अब स्वाभाविक बात है कि जिम्मेवार व्यक्ति देश का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, सितंबर से पहले इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पहले संसद के पटल पे भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा कहा जा चुका है। इस चीज का विश्वास करना चाहिए। इन लोगों के कारण से जिन्होंने 2026 तक डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकती और भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया, कुछ सीटें ऐसी थी जिस पर 16,000 की वोटर्स थे और कुछ सीटें ऐसी थी जिस पर 2 लाख वोटर्स थे। इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों ने कश्मीर वर्सेस जम्मू की थी। अब जब उसको दुरुस्त करने का मौका आया तो स्वाभाविक बात है कि इनको तकलीफ तो होगी ही। इनकी राजनीतिक दुकानदारी भी 370 के कारण से बंद हो चुकी है, हटाने के कारण से। ये लोग मनमर्जी करते थे, परिवारवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये सभी चीजें इन्हीं के कार्यकाल में आई। अब प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर को स्वर्ग बनाया है। जिस प्रकार से पहला
कोई स्टेट है जिसमें दो एम्स खुले हैं, IIT, IIM और उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इस प्रकार का एक वातावरण बदला है। 2 करोड़ लोगों का कश्मीर में आना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब प्रधानमंत्री जब एक कठिन रास्ता जो ये अमरनाथ तक कोई पहुंचा रहे हैं, इनको तकलीफ होती है। यही लोग उसके खिलाफ बोलते थे जी ये जो यहाँ का एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा, यहाँ का ये जो जंगलात हैं वो खराब कर दिए जाएंगे। इन्होंने खुद लूटा है और आज जिस प्रकार से एक वातावरण बना है तो इनको पता है कि आने वाले समय में ना तो हम जीतने वाले हैं और ना हमारी सरकार बनने वाली है। ये फ्रस्ट्रेशन इनकी खुल करके बोल रही है। उमर अब्दुल्ला बारामूला से लड़ेंगे, ऐलान कर चुके हैं उनके पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला आज। इस वजह से उमर अब्दुल्ला हमला बोल रहे थे बीजेपी पर। क्या असर पड़ेगा उनका मैदान में आना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2009 में हमने 3 सीटों पर 5000 वोट लिया था। आज 5.5 लाख वहां पर मेंबरशिप है हमारी, जो ऑनलाइन लोग अपनी मर्जी से करते हैं। हमारा आधार बड़ा है और यही पार्टियां हैं जो INDI गठबंधन के साथ बैठती थी। आज सभी ने अपने अपने रास्ते अपनाए हैं। ये एक दूसरे का सहारा लेकर के भी गुप्तकार गठबंधन बनाते थे, लेकिन आज चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, वो अलग से लड़ रही है। ये आपस में लड़ करके मरेंगी। आने वाला समय बताएगा कि इनका आधार कश्मीर में खत्म हो चुका है और ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.